Hello, hello. Is my voice clear? Hello. Yes, Okay. sir. Okay. So, a very good afternoon to each and everyone. Today, we are going to see the next wireless technology, or I could say communication technology for IoT. So, we have seen RFID, we have seen Bluetooth, we have also seen Zigbee. And in today's lecture, we are going to see Wi Fi. So, you already know what Wi Fi is because you connect your mobile through Wi Fi. There is always there are number of colleges where you do have a Wi-Fi tech in the campus, and according to which the Wi-Fi works out to be. So normally for internet connection, the Wi-Fi communication technology is being used. So similarly, Wi-Fi can be also used for IoT. So normally, what is Wi-Fi? It is called as wireless fidelity. Now, wireless, you know what is the meaning of wireless? It is completely without wire. And what is fidelity? What is the meaning of the fidelity? Is that the degree of exactness. It is called as the degree of exactness is nothing but your fidelity, and henceforth it is called as the wireless fidelity. Wi-Fi is the wireless fidelity means actually it is the short form of wireless fidelity. And what is wireless fidelity is nothing but the degree of exactness with which something is copied or reproduced. That is called as the wireless fidelity. उसका सब मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको उसका fidelity का भी मीनिंग बताया. Now let us start what how this Wi-Fi is working out, and how what are the characteristics of it, what are the applications, what are the limitations. Likewise, we have seen earlier three communication technologies. We will be also seeing this with having same characteristics, features, and all those things. Wi-Fi is the short form of wireless fidelity. It is the wireless technology that uses the radio frequency to transmit the data through air. So, with the help of RF wave, the data is transmitted from one side to the other side. Currently, there are four major types of Wi Fi technologies available. That is 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. So these are the four major types of Wi-Fi technologies that are being used today. Wi-Fi actually was introduced by Wi-Fi Alliance, which is a no-profit organization, and it is also called as the Ethernet Compatibility Alliance. So that alliance is also known to be as Ethernet Compatibility Alliance. Now let us see further. Wi-Fi is a popular wireless network technology. By using this technology, we can exchange the information between two or more devices. So we already know that how our mobile gets connected to the Wi-Fi, and then it uses the Wi-Fi technology for the internet connection. So we know that. So number of mobile devices can be connected at a one time, or number of computers or laptops can be connected. So that is by using this trans technology, we can exchange the information between two or more devices. Wi-Fi has been developed for mobile computing devices such as laptops, but it is now extensively used for mobile applications and consumer electronics like televisions, DVDs, players, and digital cameras. So now the smart electronic TVs have been there. Digital cameras are also very smart, so they can be also connected through Wi-Fi. There should be two possibilities in communication with Wi-Fi connection. That may be through an access point to the client connection, or it may be client to client connection. So Wi-Fi के दो तरीके होते हैं connections के, जो communication के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. एक है access point to client. सो उनमें एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट करता है. और दूसरा एक तो डायरेक्टली क्लाइंट टू क्लाइंट कनेक्शन. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू वाईफाई, that is access point to client or client to client connection. Wi-Fi is one type of wireless technology, and it is also commonly called as a wireless LAN, that is local area network. Now, what is the working principle of Wi-Fi? Wi-Fi is a high speed internet connection.
and network connection without the use of any cables or wires. As you can see, consisting in three essential elements. First is the radio signals. Obviously, the radio signals that is been transmitted and at wirelessly it is received by the receiver side. Then the antenna which is receiving and transmitting, and the third thing is the router. So तीन चीज़ों से ये ऑपरेट कर सकता है. ये मिनिमम तीन चीज़ें आपको लगेंगी ही वाईफाई कनेक्शंस के लिए. एक तो रेडियो सिग्नल्स लगेंगे, दूसरा एंटीना लगेगा और तीसरा राउट करने के लिए राउटर लगेगा. द रेडियो वेव्स आर की दैट मेक्स वाईफाई नेटवर्किंग पॉसिबल. मगर इसका सबसे सबसे जो हार्ट है इन सब चीज़ों का, वो रेडियो वेव्स ही है जो इस जगह से उस जगह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. द रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंटीनास एंड राउटर्स. दैट सिग्नल्स आर पिक्ड बाय द वाईफाई रिसीवर्स. सो ट्रांसमिटेड किया जाता है एंटीना से और राउटर से, और वो सिग्नल्स को पिक किया जाता है वाईफाई रिसीवर से, सच एज कंप्यूटर्स एंड योर सेल फोन्स दैट आर रेडी फॉर द वाईफाई कार्ड्स. इसका मतलब आपके मोबाइल में वाईफाई कार्ड्स होंगे, वाईफाई कनेक्शन होगा, वो रिसीवर बोल के काम करेगा. और दूसरा, एंटीना से और राउटर से जो रेडियो सिग्नल्स निकलेंगे वो वाईफाई रिसीवर्स यानी आप रिसीव करोगे और कनेक्ट होगा आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर्स. Whenever the computer receives the signals within the range of 100 to 150 feet, for the router, it connects the devices immediately. इसका मतलब whenever the computer receives the signals, जैसे ही उधर से ट्रांसमिट हुए सिग्नल एंटीना से, और वो 100 से 150 फीट में अगर वो आपका डिवाइस है तो इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो जाएगा, इमीडिएटली वो कनेक्ट हो जाएगा. Now, what are the wireless fidelity benefits? One is the wireless Ethernet. It is a wireless replacement of Ethernet. Second benefit is extended access. The absence of wires and cables extend the access to the place. So ये एक्सटेंडेड एक्सेस मतलब वायर्स और केबल्स न होने की वजह से वो किसी भी जगह जा सकता है जहां पर वायर्स और केबल्स नहीं जा सकते. तो इसका मतलब वो एक एक्सेस एक्सटेंड कर रहा है. और तीसरा है कॉस्ट रिडक्शन. Obviously, absence of wires or cables will bring down the cost because cables and wires and that to connect it to a longer distance cost more what we expect. Then mobility, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो इधर से उधर. Flexibility creates the opportunities for new applications. So these are some of the benefits of wireless fidelity or Wi-Fi. Now we'll move towards the Wi-Fi architecture. Now you can see that there are three types of architectural connection in front of you. The first one is IBSS, which is also called as independent BSS. Then second is BSS, which is also called as basic service set. The third one is ESS, which is also called as extended service set, extended service set. Now, if you look at the three architectures, different architectures, the first one is the connection between computer to computer or from device to device. It is the direct connection. So it is called as the independent BSS, or that is called as independent basic service set. Now, in second case, it is BSS. So you can see that a computer is connected to the access point. The another computer is also connected to the access point. So number of computers connected to the access point is nothing but your basic service set. Now in the third case, if you see that there are number of devices connected to the number of access points, and these access points are connected to the ESS called as extended service set. So obviously ESS should have at least one access point. That is what does it means. So we can say that BSS is nothing but the basic service set. IBSS इज इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट जिसमें एक्सेस पॉइंट बिल्कुल नहीं है, और जिसमें एक्सेस पॉइंट है वो BSS है, और जिसमें एक से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट्स है वो ESS है, जिसको हम एक्सटेंडेड सर्विस सेट भी बोलते हैं. नाउ द एक्सेस पॉइंट इज व्हाट दैट इज टू बी अंडरस्टूड. एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस दैट क्रिएट अ वायरलेस एरिया नेटवर्क. सो वो जो एक्सेस पॉइंट है वो क्रिएट करता है वायरलेस एरिया नेटवर्क. An access point connects a wired router, switch,
or hub via Ethernet cable and projects a Wi-Fi signal to the designated area. So वैसा देखा जाए तो एक्सेस पॉइंट्स क्या करता है, कनेक्ट करता है. एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू द वायर्ड राउटर जो वायर्डली कनेक्टेड होते हैं स्विचेस को या हब को वाया द इथरनेट केबल, एंड देन यू प्रोजेक्ट दिस वाईफाई to that designated area where you are estimating it to be. ESS is made up of two or more BSS. So ESS is nothing but number of, जैसे देखा वहां पर वन BSS में क्या है, दो कंप्यूटर्स है जो कनेक्टेड है एक एक्सेस पॉइंट को. सो ऑब्वियसली इसको हम BSS बोलते हैं, दैट इज बेसिक सर्विस सेट. सो ऐसे कई BSS बनाता है एक्सटेंडेड सर्विसेज. So two or more BSS with the access point are called as extended service set. The basic service sets are connected to the distribution system via their access point. So ऐसा distributed system हो जाएगा जिसमें कई BSS connected हो जाएंगे और वो via access point connect होंगे. The distribution system can be your IEEE LAN such as Ethernet. Now the architecture describes the structure and organization of the network, that is called as the architecture. So basic components कौन से है इसमें. All the wireless devices that join Wi-Fi network that may be mobile or portably fixed are called as wireless station. यानी कि आपका मोबाइल लैपटॉप जो भी वाईफाई से कनेक्टेड है उसको हम वायरलेस स्टेशन बोलते हैं, या फिर उसको STA भी बोलते हैं, दैट इज अ वायरलेस स्टेशन or STA, that may be your PC, laptop, mobile, PDA, etc. So ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आपका मोबाइल हो सकता है, एक से ज़्यादा आपके PCs हो सकते हैं, तो स्टेशंस काफ़ी हो सकते हैं. When two or more STAs are wirelessly connected, they form a basic service set. So इस तरह से जैसे मेरा एक मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, दूसरा एक मोबाइल अगेन वाईफाई से कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है. सो इस तरह से दो से ज्यादा वायरलेस स्टेशंस व्हेन वायरलेसली कनेक्टेड दे फॉर्म अ बेसिक सर्विस सेट, जो मैंने अभी बताया था. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वाईफाई. द BSS इज नथिंग बट सेट ऑफ STAs, यानी कि सर्विस वायरलेस स्टेशंस, जो कि सेट ऑफ वायरलेस स्टेशन है, कंट्रोल्ड बाय सिग्नल कोऑर्डिनेशन कॉल्ड एज CF, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन फंक्शन. यानी ये सारा सेंट्रली कंट्रोल होगा by CF, that is a coordination function. CF is what? It is a logical function that determines when STA transmit and when it receives. तो यानी कि इधर से ट्रांसमिशन हो रहा है और उधर से रिसीव हो रहा है, यानी कि एक जगह से ट्रांसमिट हो रहा है और मोबाइल के थ्रू वो रिसीव हो रहा है, वहां पर आपका वाईफाई कार्ड से वो कनेक्ट हो रहा है. तो इसका जो फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन, वो डिटरमाइन करता है आपका CF, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन फंक्शन. This is what we are talking about BSS. Then the second is the operating modes. The operating mode is selected during configuration of wireless station. All wireless station must select the operating mode before attempting or join a Wi-Fi network. So जो वायरलेस स्टेशन है, यानी कि आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, मतलब वो वायरलेस स्टेशन के अंडर आता है. सो अगर वो वायरलेस स्टेशन है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई तो भी ऑपरेटिंग मोड बिफोर अटेम्प्टिंग टू ज्वाइन द वाईफाई नेटवर्क. तो कौन सा मोड हो सकता है? वो दो किस्म के मोड से वो कनेक्ट हो सकता है. एक होता है एडॉक मोड और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड. मतलब वायरलेस स्टेशन यानी कि कौन, लैपटॉप्स, पीसीज, मोबाइल्स, और ये किसे कनेक्ट करेंगे? वाईफाई को. अगर वो वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा तो उनको एक ऑपरेटिंग मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे. सो ऐसे कितने ऑपरेटिंग मोड्स है? ऑब्वियसली देयर आर टू ऑपरेटिंग मोड्स, दैट इज एडहॉक एंड सेकंड वन इज infrastructure mode. In ad hoc mode, the wireless station communicates directly with one another using ad hoc mode. So जो wireless stations एक दूसरे से communicate करेंगे directly with one another using ad hoc mode. So ad hoc is what? It's a temporary mode. It's not a permanent mode. In infrastructure mode, it requires at least one access point, वन वायरलेस एक्सेस पॉइंट. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम एक एक्सेस पॉइंट होना जरूरी है, और एडॉक मोड में वो वायरलेस स्टेशंस कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ वन अनदर यूजिंग एडॉक मोड. सो इस तरह से दो मोड्स काम करते हैं, लेकिन अभी भी हमको इनको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करते. सो ये है, देखो फिगर.
We can see the ad hoc mode, like all the devices communicating with each other. That is called as the ad hoc mode. But in case of infrastructure mode, you can see that number of PCs are connected to your access point. So there is a group in which number of PCs are connected to one access point. Then there is another group where number of PCs are connected to the access point, and these two access points are connected in the network. They are connected through the network, and that mode is called as infrastructure mode. So I hope that you have understood this ad hoc mode and infrastructure mode. Please see it. Is there any question on this? Please let me know if you are not understanding anything. It is simple. Yes, understanding? Okay. Yes, sir. Okay. Very good. So two modes is ad hoc mode and infrastructure mode. So we have seen. और इसका कनेक्शन जो है वो कैसा होगा कि वायरलेस स्टेशन अगर किसी वाईफाई को कनेक्ट होना चाहता है तो उसको दोनों में से एक ऑपरेटिंग मोड को चॉइस करना पड़ेगा। पहला है एडॉक मोड, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। एडॉक मोड में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में वो कनेक्ट करेगा एक्सेस पॉइंट के थ्रू, और वो एक्सेस पॉइंट नेटवर्क में कनेक्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एंड एडॉक मोड। नाउ an access point is an STA with additional functionality. Obviously मैंने जैसे बताया कि access point is an STA means what? It's a device station with additional functionality. The major role of the access point is to extend access to the wired network for the client of wireless networks. All wireless devices trying to join BSS must associate with the access point. So जितने भी BSS पॉइंट है वो जब तक एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आगे का कोई मोड सेलेक्ट नहीं हो सकता। एंड एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू इट्स एसोसिएटेड एसटीएस टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या हो जाएंगे? आपका IEEE इथरनेट, मैंने जैसे इधर बताया ना, कहाँ गया वो, ये देखो लास्ट लाइन जो लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी एनी IEEE LAN सच एज इथरनेट। So distributed system is the architectural component that allows the communication amongst the access points. So distributed system अगर इन एक्सेस पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के थ्रू ही कर सकते हैं, यानी कि आपका IEEE LAN या जिसको हम इथरनेट बोलते हैं। एक बार फिर बताता हूं मैं कि ऑल वायरलेस डिवाइसेस ट्राइंग टू जॉइन BSS must associate with AP, यानी एक्सेस पॉइंट लगेगा ही लगेगा। Access point provides access to the associated STAs to distributed system, और दूसरा distributed system is the architectural component that allows the communication between access point। याद रखना बहुत सारे कंप्यूटर्स वन एक्सेस पॉइंट को कनेक्टेड है, दूसरा ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है जो एक्सेस पॉइंट को कनेक्टेड है। ये दोनों एक्सेस पॉइंट जो है वो एक दूसरे को अलाउ करेंगे कम्युनिकेशन को ओनली थ्रू द आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स called as distributed system. And what is this distributed system? It is nothing but IEEE LAN, or it may be called as Ethernet. Have you got it? Yes. So this is very fantastic concept to understand how Wi-Fi works out to be. अभी वाईफाई को ऑब्वियसली TCP मॉडल फॉलो करता है वो, और TCP मॉडल के अंदर ये जो लेयर्स है वो उनके फिक्स्ड लेयर्स है, और ऑब्वियसली इथरनेट का जो लेयर है, इथरनेट लेयर, वो फॉलो होता है 802.11। हमने देखा है 802 मेजर जो टेक्नोलॉजीज है वो 802.11 ए है, बी है, सी जी है एंड एन है, ABG एंड एन। सो अगर आप देखा जाए तो नीचे के जो लेयर है वो 802.11 से के थ्रू IEEE 802.11 के थ्रू रन होते हैं। सो उसमें फिक्स लेयर TCP मॉडल में कौन कौन आता है? फर्स्ट आएगा आपका फिजिकल लेयर, बाद में आएगा डेटा लिंक लेयर जिसके अंदर है आपका मैक और LLC, देन आएगा नेटवर्क लेयर, transport layer and application layer. So how many layers are there? It is having 5 layers. Out of these 5 layers, the first 2 layers are being run by the IEEE standard A0, run through the standard specifications of 802.11.
So let us see how they work out. So 802.11 and its extension ABG defines two layers in the 5 layer. Sorry. So you can see that the 802.11 defines the bottom two layers, that is physical layer and data link layer in the 5 layer. Now TCP मॉडल में कौन कौन से लेयर है, वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर. The data link layer is again made up of two sub layers, that is MAC and LLC. So the physical layer, what is the role of a physical layer here? It is used for modulation, encoding, bit by bit transmission, and it operates in the ISM band. Whereas the second one is your MAC, that is nothing but media access control. It is a sub layer of DLL, that is control the transmission of data, mobility management, and the MAC frame. इसके नीचे देख सकते हैं आप कि जो आपका BSS आइडेंटिफायर है, वो वो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से एड्रेसेस होते हैं. सो BSS आइडेंटिफायर यानी कि बेसिक सर्विस सेट में उसमें होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, द सोर्स एड्रेस, द रिसीवर एड्रेस एंड द ट्रांसमीटर एड्रेस. इसमें वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप जानते हैं, एप्लीकेशन लेयर भी जानते हैं, नेटवर्क लेयर भी जानते हैं. डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक और एलएलसी है. ये मैक और एलएलसी के अंदर टू सब लेयर्स है, और फिजिकल लेयर बिट बाय बिट ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है. और स्पेशली हम मैक को देख रहे हैं, वो सब लेयर है डीएलएल का, डेटा लिंक लेयर का, और वो कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड मैक फ्रेम. So this is the important as far as the fixed layer TCP model is concerned. The rest of the things you can study na, because you know that if you learn TCP IP model, you know that function, there are 7 layers in TCP IP model and OSI model. So for networking it is been used. So rest of the layers application we know. Only here some specified applications of 802.11 which is standard is a data link layer and physical layer. So both we should know. The rest of the things you can study. Now comes your Wi-Fi characteristic.
Hello, have I connected? Yes, sir. ओके, कितना देर हो गया? एक दो ही मिनट हुए ना? हेलो. हाँ सर. हाँ, ओके. सो आई विल गो लिटिल बिट टू स्लाइड्स बिफोर. मेरे ख्याल से okay, we'll go from the characteristics. Okay, so the range is about 50 meters open field, throughput is about 10 mbps, then range freedom, no setup cost, no cabling required, then flexible Yes, mobile sir. access. Yes. Sir, you are not present in the screen. Okay, 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 okay. Is it okay now? Yes, sir. Okay. So the Wi-Fi characteristics में थे हम. It is having the range around 50 meter open field. Throughput is about 10 mbps. Then it is having a range freedom. ज़्यादा ज़्यादा range तक जा सकता है. No setup cost, no cabling is required as it is a Wi-Fi wireless. It is flexible. Mobile access मिल सकता है Wi-Fi को. Operating frequency range है 5.3 GHz to 802.11a and 2.4 gigahertz frequency for B and G. Then data rate है 54 Mbps for 802.11a and G and 11 Mbps है 802.11b. Modulation techniques, तीन modulation techniques है. 802.11a को OFDM, that is orthogonal frequency division multiplexing. Then 802.11 DSS modulation technique use होगी, that is direct sequence spread spectrum. एंड 802.11g को OFDM फिर एक बार यूज हो सकता है. बैंडविड्थ है 2 से 22 मेगाहर्ट्ज तक और 13 से 14 चैनल्स यूज हो सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. अभी सबसे पहले फिजिकल लेयर को अगर हम बात करें तो फिजिकल लेयर जो है वो कोई तो भी टेक्निक इस्तेमाल करके सर्विस दे सकता है वाईफाई का. सो वो कौन कौन सी है? सो हमने अभी देखा था जैसे OFDM है, DSS है. तो ये जो सर्विसेज वो जो है वो ये टेक्निक्स यूज करके, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज करके वो वाईफाई की सर्विसेज दे सकता है. कौन कौन सी? DSSS, FHSS दैट इज फ्रीक्वेंसी हॉप, then OFDM orthogonal frequency division multiplexing and IR called as infrared. Then frequency band obviously ये भी देखा हमने 2.4 GHz और 5 MHz 5 GHz है. Data rate भी देखा, it uses 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps for 802.11b and 54 Mbps for 802.11a. Then data and network security, RC4 based stream encryption algorithm for confidentiality, authentication and integrity. Limited key management, AES is being considered for 802.11. Operating range, it can provide the service up to 50 feet for indoors and 1500 feet for outdoors. That is one of the most important features. Positive aspect, the speed of the Ethernet is very high without wire. So obviously wireless है तो उसका speed ज़्यादा होता है. It provides the connectivity for many different products from many different companies. It decreases the wireless client cards and access point cost. So नेगेटिव एस्पेक्ट ये है उसका कि इट्स सिक्योरिटी बिकम्स पुअर विद इंक्रीज डिस्टेंस एंड लोड. सो सिक्योरिटी एस्पेक्ट थोड़ा सा इशू है वाईफाई का. नेटवर्क टोपोलॉजी, इट यूजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने देखा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एडॉक दो है. एंड ओडाको इज ऑल्सो पॉसिबल बट इट यूजेस इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड एक्सेस पॉइंट, एक्सेस प्रोटोकॉल्स के लिए वो यूज करते हैं CSMA और CSCA. देन वाईफाई लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस कौन कौन से हैं? स्पीड इज स्लोअर देन द केबल नेटवर्क, रेंज इज अफेक्टेड बाय द मीडियम,
travel best through open space and reduced by wall, glass, water, etc. So obstacle से reduced हो सकता है, medium से भी affected हो सकता है, as it is been through air, so it gets affected. Sometimes in mediums comes in between like walls and glass, then its speed goes little bit less slower. Then security, greater exposure to risk, ये बड़ा drawback है इसका. कोई भी unauthorized access कर सकता है, compromising data, denial of the services. These are some of the issues. Then prone to interface at 2.4 gigahertz, power consumption is high. These are some of the Wi-Fi limitations. Then some of the advantages, wireless laptop can be moved from one place to another place, so obviously due to wireless technology. Then Wi-Fi network communication devices without wire can reduce the cost of wires. Then the setup and configuration is easy than the cabling. It is completely safe and it will not interfere with any network. This is also advantage. We can also connect internet via hotspot. So also know what how you know what hotspot means. So mobile hotspots जैसे ही हम connect करते हैं, हम हमारा जो access है एक device का, वो दूसरे डिवाइस को एक्सेस दे सकते हैं थ्रू मोबाइल हॉटस्पॉट. यानी कि ऐसा अगर मोबाइल हॉटस्पॉट्स के थ्रू अगर सपोज मेरा नेट नहीं चल रहा है और किस मेरे फ्रेंड का चल रहा है, तो वो मोबाइल हॉटस्पॉट से मैं मेरा नेट जो है वो इस मोबाइल को इस्तेमाल करने दे सकता हूँ. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज हॉटस्पॉट. एंड वी कैन कनेक्ट इंटरनेट वायरलेसली, सो दैट इज the advantages. Then some of the applications like in electronic devices, then industrial process and control applications, emergency applications, battlefield or disaster situations maybe, surveillance camera, then vertical market, then phone companies uses Wi-Fi hotspot for their users to get free internet access. So these are some of the Wi-Fi applications, and I hope that this much is enough for your syllabus also. So once again, we'll little bit go to the revision. Okay, so this is wireless, just little bit of revision. So Wi-Fi, it's a wireless fidelity, uses radio frequency to transmit the data through air. Four major types of Wi-Fi technologies: 11A, 11B, 11G, and 11.9. It was introduced by Wi-Fi Alliance with no profit organization. Then इसमें आएगा Wi-Fi is one of the type of wireless technology, commonly called as wireless LAN. We can exchange the information between two or more devices. Then working principle में it is operating with three essential elements. One is the radio signal, second is antenna, and third one is a router. The radio waves are the key for the networking possible. Mostly the range is about 100 to 150 for the router. It connects the device immediately. Then benefits: wireless Ethernet, extended access, cost reduction, mobility, and flexibility. Then these are the three infrastructure you can three architecture you can see. One is your IBSS, that is independent BSS. BSS means an basic service set, and ESS means extended service set. Then the access point is a device that creates a wireless area network. It connects to the wired router, switch or hub via Ethernet cable and projects a Wi-Fi signal to the designated area. ESS can be made up of two or more BSS with AP. BSS are connected to the distribution system via their APs. And this distribution system is nothing but IEEE LAN such as Ethernet. तो बेसिक कंपोनेंट्स उसका BSS है, और BSS क्या है? Wireless station may be a wireless device that joins the Wi-Fi network, mobile or portably fixed, are called as wireless station, that is STA. And the BSS is a set of STAs controlled by a single coordination function, that is CF. CF is a logical function that determines when STA transmits and when it receives. The architecture describes the operating mode. So there are two different operating modes before it is attempting to join Wi-Fi network. One is ad hoc mode and the another one is infrastructure mode. So this is the ad hoc mode in which all the devices are connected with each other. Whereas in case of infrastructure mode, there are two groups. One group, the computers are all the clients are connected to the access point,
In the another group, the clients are again connected to the other access point. These two access points are connected to the distributed system, that is nothing but IEEE LAN or Ethernet. So this is how the role is, and this is the fixed layer of the TCP model for communication purpose: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and application layer. So 5 layers are used here. The last two, bottom two layers, follow the specification standards of 802.11. One is physical layer and the other one is a data link layer. So this thing you know. Then the Wi-Fi characteristics, range is about 50-meter open field, mobile access, flexible, no setup cost. Then data rate 54 Mbps, 11 Mbps for 11A and 11B. Modulation technique OFDM, DSS, bandwidth 2 to 22 megahertz. These are some of the characteristics and features. The positive aspect is that speed of Ethernet is very high without wire. It provides the connectivity for many different products from many different companies. It decreases the wireless client card and access point cost. The negative aspect is that it becomes poor with distance increasing in the distance and load. So that is the limitations. Speed is slower than cable network, but it depends upon where where it is being used. So as we cannot say that speed is slower for the than cable network, because definitely what happens is that as the distance increases, the speed becomes little less. Range is always affected by the medium. So that's why I'm saying if the medium is air directly, then it will go faster. But if there are different mediums which comes in between, then the speed will become slow. Then greater exposure risk to the security, prone to interface to 2.4 gigahertz, and power consumption is high. Then advantages, can be easily moved from one place to another place. No cabling, no interference with the other network. Can be connected with hotspot and connect with wireless. Applications: surveillance camera, electronic devices, industrial process control, vertical matrix, phone companies. So these are some of the applications. So I do feel so you have understood. Is there any question? Yes, is there any question, or should we go for the attendance? Should we go for the attendance? Yes, Yes, plus sir. reply. Okay. Just a moment. Roll number 1. Roll Yes, number sir, present. present. Roll number 2. Yes, sir. Okay. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, 6, 7. Yes, sir. Okay. 8, 9, 10, 11, 12, Yes, sir. 13, 14, 14 present, sir. 15, 16, Yes, sir. 17, 18, Present, sir. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Yes, sir. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Yes, sir. okay, 38, 39, Yes, sir. 40, 41, 42, 43, 44, 45,
43 present, sir. 43 is there. Okay. 44. Hello. हाँ 43 लिखा है मैंने. 44, 45, 46. Present, sir. Okay. 47, 48, 49, 50, Present. 51, 52, 53, 54, 55, Present. 56, 57, 58, Present, sir. okay, 59, 60, Yes, sir. 61, 62. Okay, any other number? Is it okay? Okay, thank you.